पिछले वीडियो में मैंने कवर किया व्हाइल लूप। अब इन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे हाउ टू यूज डू व्हाइल लूप। इट इज़ वेरी इजी। आपको एग्जाम्पल तो पता ही होगा। यस, व्हाइल लूप का एग्जाम्पल था कि जैसे बस कंडक्टर पहले ही टिकट चेक करता है और फिर बाद में आपको बस में बैठने के लिए अलाउ करता है। दैट इज़ दी प्री कंडीशन, है ना, प्री चेकिंग बोलते हैं हम जिसको। कंडीशन पहले चेक होती है। अब डू व्हाइल में एग्जैक्टली अपोजिट है, राइट। सबसे पहले वैल्यू को इनिशलाइज किया जाएगा। फॉर एग्जांपल लुक एट दिस इनिशलाइजेशन। फिर उसके बाद ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ लिखना है डू। फिर आएगा printf और आपको कोड आएगा। आई विल राइट ए पीस ऑफ कोड हियर। ओके, यहाँ पे इट इज़ ऑप्शनल, यू कैन यूज इंक्रीमेंट और यू कैन यूज अ डिक्रीमेंट ऑपरेटर, राइट। और लास्ट में आएगा आपका व्हाइल लूप, ठीक है, व्हाइल कीवर्ड, नॉट अ व्हाइल लूप, ठीक है। और यहाँ पे है सेमीकोलन। सेमीकोलन इज कंपलसरी डू व्हाइल लूप, ठीक है। सो लेट अस एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। इसका एग्जांपल अब आपको बताता हूँ कि सबसे पहले ये है एग्जिट कंट्रोल लूप। एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। फॉर एग्जांपल जैसे आप ट्रेन में जनरल बोगी में आप सफ़र कर रहे हैं और आपने टिकट निकाला और जैसे आप प्लेटफॉर्म पे उतरे तो फिर टीसी चेक करता है। अगर आपका लक अच्छा रहा तो टीसी आपको चेक नहीं करेगा, तो एटलीस्ट यू गॉट अ चांस टू ट्रैवल। आपकी एटलीस्ट जर्नी कंप्लीट हो गई। एटलीस्ट दिस piece of code will get a chance to execute once. That is the objective of the do while loop, right? Okay, so let us write a small program. Let us try to 1 to 10 number by using while loop, and we have our editor. Yeah, I don't want to copy again and again. Let us copy this program, right? Paste here and let us change few things. Okay, so I will change, yes, this is do and this is while. This is the only change we have to do. All right, now it is over. Let us write it's a do while, right? Do while loop demo. Let us save this file. Do, right, it's a while dot c. Okay, so let us execute first, then I will explain the program. Where is the output? Yeah, it is visible, right? 1 to 10 number. Okay, yeah. Now this is the program. What is happening here? Okay, I think, can I write? Yes, I will explain first. Here the value of I is equals to 1. The value will be initialized, that is the 1. Let me copy this program. I can explain you better in this editor. Okay, yeah, perfect. All right, yeah. So this is our initialization. We have one variable as we had a discussion. Let us write a variable here. Okay, variable here, and it is output window. Yeah. So I is the variable. What is the value of I? It is 1, right? Let us write 1 here. Okay, there. Program always start from while. It is okay. Integer I, we have declared I variable. I is equals to 1. Yes, I is equals to 1. Then do, nothing will happen. Okay, then printf %di. I के वैल्यू में प्रिंट करनी है, तो मैंने प्रिंट कर दी 1, राइट। उसके बाद हुआ I प्लस प्लस, वैल्यू इंक्रीज बाय 1, नाउ इट इज 2, राइट। देन while I is less than 10, yes, condition is true. If condition is true, then control will pass to the do. Okay, all right. Then again it will print the value of I. What is the value of I? It is 2. It will print 2.
We are using slash n, that's why it is printing like this. Then I plus plus, the value become 3. 3, still 3 is less than 10. Yes, condition is true. Then it will pass control to the do keywords. Again it will print 3. So series will go like this, right? Let's cut 5. It will print up to 10. Okay, let us, for example, it is 10. 10 is less than equals to 10. Yes, condition is true. It will print. It will go to upward, print the value of I, that is 10. It will print here. Then I plus plus, the value of I will become 11. 11 is less than 10. No, condition get false. Then it is exit from the loop, right? It exit from the loop. That is the concept of do while loop. I hope you understood, right?